जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमारा आज 29 लेक्चर है रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज हम जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि द रिस्पिरेटरी सिस्टम अलाउ अस टू ब्रीथ, इनहिलेशन के लिए, एक्सहेलेशन के लिए। द सिस्टम ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी कॉल्ड इनहिलेशन। के जब सिस्टम जो है ऑक्सीजन लेके आ रहा होता है हमारी बॉडी में, उसको इनहिलेशन का नाम दिया गया है। एंड सेंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं तो एक्सहेलेशन का नाम दिया गया है। दिस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजेस को जो है वो रिस्पायरेशन का नाम दिया गया है। बेसिक हम मैकेनिज्म देख लेते हैं रिस्पायरेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं, ये हमारा दरअसल पहले भी हमने एनाटमी वाली बुक में भी हमने लेक्चर देखा हुआ, बट फिजियोलॉजी में इसकी थोड़ी ज्यादा डिटेल है। The air that we breathe in and out of the lungs varies in its pressure. Pressure पे depend कर रहा होता है. So basically, when there is a fall in air pressure, the alveolar spaces fall and the air enters the lungs in inspiration. And as the pressure of the alveoli within exceeds the atmospheric pressure, the air is blown from the lungs. Expiration, like inhalation और एक्सहेलेशन के प्रोसीजर को ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा है इसमें। द फ्लो रेट ऑफ एयर इज इन प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। द ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, जैसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, वही इनहेलेशन एक्सहेलेशन एक ही बात है। फिर हम इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द ब्रीथिंग मैकेनिज्म एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। The gaseous exchange occurs by diffusion in the alveoli. Alveoli procedure, it depends upon the pressure. Pressure पे depend कर रहा है, differences between blood and tissues के दरमियान वाला जो pressure है, और atmospheric air and blood. The exchange of gases takes place at the surface of alveolus. ठीक है। खैर अब inspiration को हम देख लेते हैं। In the process of inspiration, there would be a concentration of muscles attached to the ribs. जो ribs के साथ muscles attached होते हैं, उनकी concentration पे depend कर रहा होता है basically on the outer side, which pulls out the ribs and results in the expansion of the chest cavity. Later, बाद में the diaphragm contracts and moves downward and expands the chest cavity, resulting in the contraction of the abdominal muscles. The expansion of the chest cavity produces a partial vacuum which sucks air into the lungs and fills the expanded alveoli. Mechanism की हम basically इस पे थोड़ी सी बात करें, हमें ज्यादा clarify होगा, definition हमें ज्यादा clarify होंगी। The process of intake of atmospheric air is known as inspiration. It is an active process, एक active process है। फिर दूसरा mechanism, when the volume of the thoracic cavity increases and the air pressure decreases, inspiration takes place. Contraction of external intercostal muscles increase the volume of the thoracic cavity. Contraction of the diaphragm further increases the size of the thoracic activity. Simultaneously, the lungs expand. उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। With the expansion of the lungs, the air pressure inside the lungs decreases. Air pressure जो है lungs में decrease हो जाएगा. The pressure equalizes and the atmospheric air rushes inside the lungs. Expiration. The expiration process is considered once after the gaseous exchange. Gases जब exchange हो रही है तो उसके बाद ये procedure हो रहा होता है lungs में, and the air is expelled. This expulsion of air is called expiration. During this process, muscles attached to the ribs contract, the muscles of the diaphragm and the abdominal relax हो जाते हैं जो muscles है diaphragm के abdomen के, which leads to a decrease in the volume of the chest cavity and increases the pressure of the lungs, causes the air in the lungs to be pushed out through the nose. Mechanism of expiration. Mechanism की हम थोड़ी सी बात करते हैं। इजी है। द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करवा रहे हैं बॉडी से, उसको एक्सपायरेशन का नाम। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव वो एक्टिव प्रोसेस था, ठीक है, ये पैसिव प्रोसेस है। एमसीक्यू के लिए आपने ये याद रखना है। उसके बाद it occurs when the size of the thoracic cavity decreases and the air pressure outside increases. Now the external intercostal muscles relax and the internal intercostal muscles contract. As a result, the ribs are pulled inward and the size of the thoracic cavity is reduced. The diaphragm is relaxed, and the lungs get compressed. Consecutively, the pressure increases and the air is forced outside. प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ, ये लाइक पिक्चर में दिखाया गया है एक्सहेलेशन इनहेलेशन का।
लंग्स है, रिब्स है और डायफ्राम है थर्ड प्रोसीजर में। अब हम थोड़ी सी ना रिस्पिरेटरी रेट की बात करते हैं। रिस्पिरेटरी रेट और ब्रीथिंग रेट इज द नंबर ऑफ ब्रीथ्स वी टेक पर मिनट के हवाले से बताया जा रहा है कि द नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट फॉर एन अडल्ट एट रेस्ट इज 12 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट के हिसाब से। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पिरेशन रेट अंडर 12 or over 25 breaths per minute while resting may be a sign of an underlying health condition। टाइडल वॉल्यूम क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। Tidal volume is the amount of air that moves in or out of the lungs with each respiratory cycle। ये एक total volume है जो कि out भी हो रहा है, in भी हो रहा है। It measures around 500 ml in an average healthy adult male में and approximately 400 ml in a healthy female में अलग अलग। It is a vital clinical parameter that allows for proper ventilation to take place। ventilation वाले procedure में when a person breathes in oxygen from the surrounding atmosphere enters the lungs, it then diffuses across the alveolar capillary interfere to each atrial blood at the same time carbon dioxide continuously forms as long as metabolism takes place। Expiration occurs to expel carbon dioxide and prevents it from accumulating in the body। The volume of inspired and expired air that helps keep oxygen and carbon dioxide levels stable in the blood is what physiology refers to as tidal volume। total volume बोला जा रहा है यहाँ पे। Functions of respiratory pathway देखें, जैसे पिक्चर में दिखाया गया, nasal cavity plus nasal sinus, nostril, oral cavity, pharynx, left mid, primary bronchus, ठीक है। ये आपको पिक्चर में प्रॉपर दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम मजीद देखते हैं पाथवे ऑफ एयर क्या है, ठीक है। nasal cavities or oral cavities, pharynx, trachea, primary bronchi, right and left, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles, alveoli, site of gas exchange। The exchange of gases O2 and CO2 between the alveoli and the blood occurs by simple diffusion के through ये सारा कुछ हो रहा है। O2 diffusing from the alveoli into the blood and CO2 carbon dioxide from the blood into the alveoli। Diffusion requires a concentration gradient, so the concentration or pressure of O2 in the alveoli must be kept at a higher level than in the blood, and the concentration or pressure of CO2 in the alveoli must be kept at a lower level than in the blood। We do this of course by breathing। Of course breathing के through ये सारा procedure हो रहा है, continuously bringing fresh air with lots of O2 and little CO2 into the lungs and the alveoli। तो ये human respiratory system है। तो breathing is an active process requiring the concentration of skeletal muscles। The primary muscles of respiration include external intercostal muscles जो कि between the ribs के located है, and the diaphragm, a sheet of muscle located between the thoracic and abdominal cavities। The external intercostal plus the diaphragm contracts to bring about inspiration। Contraction of external intercostal muscles की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें एरो की फॉर्म में दिखाया गया है कि एलिवेशन ऑफ रिब्स एंड फिर sternum increase front to back dimension of thoracic cavity lowers air pressure in lungs, air moves into the lungs। Contraction of diaphragm moves downwards, increases vertical dimension of thoracic cavity, lowers air pressure in lungs, air moves into lungs। To exhale, relaxation of external intercostal muscles and diaphragm, return of diaphragm, ribs and sternum to resting position, restores thoracic cavity to pre-inspiratory volume, increases pressure in lungs, air is exhaled। ये contraction के बारे में सारा बताया। The diaphragm functions in breathing। ब्रीथिंग के थ्रू इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये आपने ट्राई करनी है डायग्राम असाइनमेंट में। न्यूरल कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन का क्या कंट्रोल है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वेंटिलेशन पहले देख लेते हैं क्या चीज है। is the movement of air in and out of the lungs which facilitates gas exchange। It occurs via the respiratory muscles which contract and relax rhythmically to fill the lungs with air during inspiration and empty them in expiration। Involuntary control, involuntary respiration is under subconscious control। The diaphragm and intercostal muscles are the primary respiratory muscles। Basically they are stimulated by groups of neurons located in the bones and medulla। These neurons form the respiratory control center भी बोला जाता है। They send impulses to the primary respiratory muscles via the phrenic and intercostal nerve which stimulate their contraction। There are three main groups of neurons involved in respiration।
अब ये कौन कौन सी इन कंट्रोल से देख लेते हैं। वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप कंट्रोल्स एक्सपायरेशन, डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप जो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा, द टाइम रिस्पिरेटरी ग्रुप कंट्रोल्स द रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। once the neuron stop firing the inspiratory muscle relax and expiration, एक प्रोसीजर पहले ही होगा इनहेलेशन का, एक्सहेलेशन का बाद में होगा। पिक्चर में भी सारा प्रोसीजर दिखाया गया है। वॉलंटरी कंट्रोल क्या है। Voluntary respiration is under conscious control. ठीक है, it is controlled via the motor cortex in the cerebrum, which receives inputs from the limbic system and hypothalamus. The mechanisms involved are not completely understood, but signals are thought to be sent to the spinal cord from the motor cortex, which are then passed on to the respiratory muscles. है ये आपको फिर केमिकल कंट्रोल क्या है, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। All control of breathing is fundamentally neural. The sensory cells that detect changes in the external environment and the composition of the blood and cerebrospinal fluid, the central processor in the brain, and the outputs that activate the muscles of breathing are all nerves. A major difference between neural control and chemical control of breathing is the difference in time scale of their responses. Neural control responds in fractions of a second and changes the size and duration of individual breaths. Chemical control normally much slower in its response, changing breathing minute by minute. In a sense, chemical control determines minute ventilation, whereas neural control determines the most efficient pattern to achieve that ventilation with the minimum expenditure of work. The objective of respiration is homeostasis of atrial blood in terms of O2 and CO2, which is closely related to atrial H plus. H plus, this is achieved by matching ventilation to the metabolic activity of the body. This matching requires monitoring of the chemical composition of atrial blood and the sensors which act as meters are also known as chemoreceptors का नाम दिया गया है। We can divide chemical control of breathing into section in terms of the anatomical location के हवाले से divide किया जा रहा है of the sensors, or alternatively when they are sensitive to those within the central nervous system are called central chemoreceptors, and those outside peripheral chemoreceptors. Central chemoreceptors are more sensitive to excess CO2. Peripheral chemoreceptors are more sensitive to lack of O2. It is rare for excess CO2 or lack of O2 to occur alone. They usually occur together, and the whole chemoreceptor system is not systematically बताया जा रहा है पिक्चर में। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन बेसिकली क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये चीज आ रही है। An artificial breathing technique is used when natural breathing has stopped or has flattened. Of course, artificial technique तब use की जाएगी when used properly. Such strategies can help prevent some drownings, choking, strangulation, suffocation, carbon monoxide, poisons, and electric shocks. Artificial respiration is necessary to resuscitate a patient into two main ways. दो तरीके से. It is crucial for the upper respiratory tract, mouth, throat, pharynx, and the lungs to have an open channel. During the beating of the heart, oxygen and carbon dioxide are exchanged in the terminal air sacs of the lungs. For though these effects to succeed, they must begin as soon as possible and continue until the victim begins to breathe again. Mouth to mouth respiration, mouth breathing. ठीक है, is among the best artificial breathing method. This is one when this method is used. क्या method है, इसमें हम बात कर लेते हैं। The doctor kneels near the neck of the patient, observes him from the side. Facilitate the patient neck full extension. A pillow is placed below the patient's shoulder. The physician covers the patient's mouth with a handkerchief and closes the patient's nostrils with the left hand. The physician will blow expelled air into the patient's mouth in order to elevate the patient's oxygen level. Passive expiration occurs when the mouth is removed. This method results in better ventilation because it stimulates the respiratory system of the patient by using expired air containing carbon dioxide. Transport of oxygen and carbon dioxide in the blood, इसको हम देख लेते हैं last में. The exchange of gases between the external environment and the tissues is the transport of oxygen and carbon dioxide to and from the lung by the blood. Although oxygen dissolves in blood, only a small amount of oxygen is transported this way. Only 1.5% of oxygen in the blood is dissolved directly into the blood itself. Most oxygen, 98.5%, is bound to a protein called hemoglobin and carried to the tissue. Oxygen is carried both physically dissolved in the blood and chemically combined to hemoglobin. Carbon dioxide is carried physically dissolved in the blood, chemically combined to blood proteins as amino compounds and as bicarbonate. Oxygen is transported both physically dissolved in blood and chemically combined to the hemoglobin in the erythrocytes.
Much more oxygen is normally transported combined with hemoglobin than in physically dissolved into the blood without hemoglobin. The cardiovascular system could not supply sufficient oxygen to meet tissue demands. फिजिकली डिजॉल्व का टेम्परेचर बताया जा रहा है कि एट ए टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस 1 ml of plasma contains zero oxygen per mmHg. Whole blood contains the similar amount of dissolved oxygen per milliliter is sorry liter, because oxygen dissolves in the fluid of the erythrocytes about the same amount. तो ये हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।